This news is brought to you by Bhushan Jewelers, Solan. रोटरी सोलन का 52वां अधिष्ठापन समारोह सोलन में आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, नौनी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर चंदेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अनिल चौहान को प्रधान व डॉक्टर कमल अदवाल को सचिव नियुक्त किया गया। सभी को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने निर्वाचित अध्यक्षों को बधाई देते हुए लोगों से आग्रह किया कि रोटरी सोलन की पहल पर ऑर्गन डोनेशन व नेत्रदान के लिए बड़ी संख्या सामाजिक संस्थाओं में स्वेच्छा से लोग आगे आएं। Honorable Chief Guest of the day, Professor Rajeshwar Chandel ji, and Madam Dr. Anshu Chandel ji, Assistant Governor Rotarian Manish Tomar ji, Madam Payal Tomar ji, District Chief Sergeant our own past President Rotarian Arun Trehan ji, past District Chairman Sangeeta Trehan ji, Rotarian Atul Tamri ji, District Secretary RI District 3080, Rotarian Parikshit Madudia ji, District Secretary, District 3080, Dr. P.K. Khosla ji, Mrs. Saroj Khosla ji, Captain Nisha Dhankar ji, Dr. Kiran Kumar Singhal ji and Dr. Nirja Singhal ji, Rotarian सुरेंद्र जी जो पानीपत से आए हैं बहुत दूर से, मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर संजय सोनी जी, मैं आपका भी सर स्वागत करता हूँ। Office bearer of various organizations, fellow Rotarians, honor guests and dear friends, it is a great privilege for me to be standing before you tonight. It is my honor and privilege to serve as a 52nd President of Rotary Club Solan. I thank you all for your trust and confidence reposed in me and to let me serve as a President of this prestigious club. I assure you of my best effort to come up to your expectation, and for this I need all your support and cooperation and active participation. I am grateful to my parents, my teachers and my senior in Rotary who taught me so many things that I am able to accept this special role. I am very much thankful to my wife Natasha, who always supported me. You have just seen the detailed report on a wonderful project completed in the previous year under the able leader of immediate past President Rotarian Karthik Surji. Club has many signature projects like emergency van, ambulance van, which is available 24/7, more than 20 years. Hersey van service is available for town free of cost for more than 10 years. Refrigerator coffin cask is available dedicated to free of cost. And during COVID-19, Rotary Solan Trust started oxygen bank with 25 cylinders and 5 concentrators, which is also a free service. And today I have the great honor of introducing my husband Anil Chauhan. He was born on September 27, 1984 to Shrimati Kamla Chauhan and late Shri M.L. Chauhan. He did his schooling from SVN School, graduation and MBA in Commerce from HP University. During his school and college days, he was an active member of various associations. He has always been a very dedicated social worker. He has worked with Special Olympics Bharat, Himachal Pradesh, and attended various programs of Special Olympics. He also attended 2009 World Winter Games at Adao, USA. He is State President of Youth for Human Rights International. He is a regular blood donor. Anil started his Rotary journey as Rotractor in 2003 and served on various positions. He is a very active member of this club since he joined the Rotary in 2016. He was club secretary in 2019-20. He is also the recipient of numerous awards
including the Youth for Human Rights Asia Hero Award and Award for Best Protractor in District 3080. He is known as a Sankat Mochan in Rotary and then has a strong personality, and yet he is the most gentle, kind and caring man that I have ever met. He is a wonderful husband and an incredible father to our beautiful daughter Lavya. I am grateful to be sharing life, love and parenthood with a wonderful man like him. दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।